Hi everyone, welcome back to my channel, and today we are creating water drop heart. um okay, so for this you have to take a layer, and with the white color I will draw a heart shape. Okay, and now fill it with the color, white color. Okay, now we will add a new layer, then switch on the clipping mask, and heart वाली layer के ऊपर you have to create one more layer. Okay, in this layer we will add the shadows. First, take a background color or take any brush and color it with the background color. And for the brush I am using dry ink, you can use whatever you like. Okay, then color it properly and make sure इसके edges पे आप बिल्कुल लास्ट तक कलर ना करें, बिकॉज हमें वो चाहिए shadows के लिए. and now use the Gaussian blur जब तक ये एक decent थोड़ा सा blurry उसमें ना आ जाए. then add a new layer, and in this layer make this color with the black color, black or dark grayish. और ये हम हार्ट के ऊपर वाले पार्ट पे करेंगे, बिकॉज वहाँ पे हमें थोड़ा सा डार्क दिखाना है. दैट्स वाई आई एम यूजिंग अ ब्लैक कलर. ओके, नेक्स्ट इसको भी हम ब्लर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द गॉसियन ब्लर. ओके, नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट. एंड नाउ what we have to do on the black shade wala layer, you have to create a shine effect. so उसके लिए मैंने white color लेके एक इस पे थोड़ा सा shine मैं बना रही हूँ. okay, yeah, that's it and it's ready. And you can use it for your backgrounds or for your wallpaper or anything wherever you want to use. And if you like the video, make sure to hit the like icon and make sure to hit the bell icon for the new updates, and subscribe my channel. And thank you for watching. Bye guys.